Hello guys, welcome back to our YouTube channel Easy Patashala, and today we are going to start our series which is Boost Your Score series. In this we are going to cover the chapter life processes. As I have already discussed, we are going to cover all the high weightage chapters and easy to score chapters. So life processes generally comes under the category of world of living. So world of living consists of 4 chapters, which is life processes, then control and coordination. Then you'll also have how do organisms reproduce, and you have heredity and evolution, right? So in this series, now first chapter that we have took here is life processes, and all these 4 chapters which I have mentioned earlier will come for 25 marks. So if you are going to see this all the videos related to this, because it will cover all the previous year questions, right? So all the previous year questions, which includes 1 mark, 2 marks, 3 marks, and 5 mark questions from each chapter that has been repeatedly asked. So I'm going to explain in both Hindi and English. So if someone has any problem in understanding and want to suggest which language we followed in the further videos, you can just drop down a comment. So let's start with this chapter, life processes. We'll have a brief summary of this chapter first. So you should know what is the life process, right? So life process are the different activities which are essential for the survival of an organisms. Examples are nutrition, respiration, transportation, excretion, etc. तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है बच्चे? वो चीजें जो एक ह्यूमन बीइंग और या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉलो करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, राइट? और उसकी मेन चीजें क्या हम हाईलाइट करेंगे इस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में है कि न्यूट्रिशन, कितने तरीके की न्यूट्रिशन होता है, कैसे कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, एंड व्हाट इज द टोटल प्रोसेस. ओके, देन हम देखेंगे क्या रेस्पिरेशन है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड कौन सी ऑर्गेनिज्म में कौन सी रेस्पिरेशन होती है. देन ट्रांसपोर्टेशन, it gives a basic idea of how transportation of food, nutrients, minerals, water, and all these things happen in our body and also in the plant's body. Then excretion, the removal of waste substances from our body is known as excretion, right? फिर हम important point यहाँ पे ये है कि हम देखेंगे difference between living and non-living organisms जो है वो base होती है the presence of life processes के हिसाब से. राइट, नाउ वी विल सी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. अब तो ये सब इंट्रोडक्शन है ब्रीफली कि कौन सा प्रोसेस क्या क्या इंक्लूड करता है एंड व्हाट आर द की पॉइंट्स. अगर आपको कुछ भी एग्जाम में याद नहीं आ रहा हो, सो जस्ट हैव दिस पॉइंट्स इन योर ब्रेन एंड उनको एलैबोरेट करते रहो. द ओनली थिंग यू हैव टू मेंशन और मेंशन करना यहाँ आपको भूलना नहीं है कि ऑल द इम्पोर्टेंट टर्म्स. एंड बच्चों, जब भी आप एग्जाम प्रेजेंट कर रहे हो, प्लीज कीप ऑल द पॉइंट्स ऑन द पेपर, एंड जब भी आप एक एलैबोरेटेड आंसर्स लिख रहे हो उस टाइम पे यू जस्ट अंडरलाइन द की पॉइंट सो दैट इवैल्यूएटर के लिए इजी हो जाएगा करेक्ट करने के लिए, राइट? डोंट राइट इन जम्बल्ड पैराग्राफ्स, एकदम डोंट गिव देम एन इंप्रेशन ऑफ एन एम्बिग्विटी. आप ऐसे चीजें करो जिससे उनको इजीली पॉइंट अट्रैक्ट हो जाएगी एंड दे विल नॉट इवन रीड योर एंटायर आंसर. एंड बायोलॉजी में तो की फैक्टर ये है कि वेरेवर यू फील लाइक देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ अ डायग्राम, मतलब उस टॉपिक से आपको रिलेटेड जो भी डायग्राम आता है, जस्ट छोटा सा भी हो बड़ा सा भी हो, जस्ट ड्रॉ इट. फाइन. इससे क्या होता है, दे नो दैट यू आर comfortable with this concept and you are clear with it. Okay, so nutrition क्या होता है? The process by which organisms obtain and utilize food for energy and growth, right? तो इसमें क्या होता है, we are going to take some food, हम वो फूड को यूटिलाइज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्या, एनर्जी, और हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए, राइट? अब मैंने जैसे कि बोला देयर आर डिफरेंट टाइप्स. सो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में एक होता है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है एटोट्रॉफिक. टू बी वेरी प्रिसाइज, ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, प्लांट्स के अलावा कोई और ऑटोट्रॉफ होता नहीं है. देन नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक. इसमें क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड और फॉर देयर न्यूट्रिशन, दे आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफ्स. एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड ऑल दोज क्रिएचर्स, right? Ab the basic thing that you have to mention while writing these uh, points is you have to know the reactions, right? Autotrophic के लिए एक reaction हो जाएगा which is carbon dioxide plus water. जब ये दोनों मिलते हैं they produce glucose and oxygen. This is a basic process that is followed by plants और इसके हम photosynthesis बोलते हैं. I hope this is clear. Then होता है heterotrophic, जिसमें you will also you'll not do anything here. You'll just simply consume the food by other organisms, right? अब नीचे in autotrophic reaction में है you have to write this photosynthesis का equation which is very important. आप जब भी लिख रहे हो write the equation and then put it in a clear box so that
इवेल्युएटर को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. So 6CO2 plus 6H2O in the presence of light will give you 6 C6H12O6 plus 6O2. So we are going to produce glucose and oxygen. ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6. बच्चों कहीं पर भी आपको लगता है कि लिखना है कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था, whenever you're watching my videos as is the final revision for your boards and you're going to boost your score here, please take a pen and a notebook with you and note down the points wherever you feel like, and then which will be used for revision. And also all the PDFs of this whole notes and previous year questions will be provided in the description as well, right? Any suggestions can be put up in the comments also. I'll be covering those topics also. Fine. फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन. न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन. सो अभी रेस्पिरेशन क्या होता है हम सबको पता है. वी टेक इन oxygen and give out carbon dioxide. I'm so sorry. So we take in carbon dioxide and give out oxygen, right? So respiration. Basically in 10th class you're not going to write that definition, obviously. So you're just going to write down that we are going to break down of glucose होता है यहाँ पे to release energy. फाइन. अब इसमें भी टाइप्स हो गए, दो टाइप्स होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एरोबिक रेस्पिरेशन. इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के साथ एंड एरोबिक होता है ऑक्सीजन के बिना. कौन से क्रिएचर्स इसको यूज करते हैं, कहाँ पे ये सब होती है, दैट इज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट. एंड देन इक्वेशन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन देख लो बच्चों. C6H12O6 plus 6O2 will give you 6CO2 plus 6H2O plus energy. At the end ये जो respiration है, it will give out some energy as well. Fine. Then next होता है the important topics in this respiration है कि human respiratory system, उसको explain करने बोलेंगे, elaborate करने बोलेंगे. You have any diagrams related to it, you can draw and show them. Then exchange of gases in lungs कैसे होता है. Okay, oxygenated blood, deoxygenated blood, all that stuff also can be written from this respiration वाला process. Oxygen pass होता है blood में, then oxygenated blood is produced, oxygen rich blood is produced, all this stuff can be written there. आपको जितने भी points याद आते हैं आप लिखो वहाँ पे exam पे, and then don't forget to underline the key points जो आपको लगता है important points and it will fetch your marks. Please underline those points with pencil neatly. It will give a very good impression for the evaluator, right? फिर next we are going to see respiration in plants. अब ह्यूमन रेस्पिरेशन में दीज आर द थिंग्स, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड इसी में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं. सो आपको जाते जाते समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर रिपीटेड क्वेश्चंस. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू सी दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं आपको समझा भी दूंगी, आप एक बार याद भी कर लेना वीडियो को पॉज करके, राइट. देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन. न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन. अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ समथिंग, राइट. सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज, किस चीजों की मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर, न्यूट्रिएंट्स की होगी, ऑक्सीजन की होगी एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स की होगी, वो तो होना ही है बॉडी के अंदर. देन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट. सो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में हम लोग लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम ब्लड के बारे में लिखेंगे, ब्लड के आरबीसीज के बारे में, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स के बारे में लिखेंगे. यहीं पे आपका आधा पेज भर जाएगा. देन यू कैन राइट अबाउट हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड व्हेन यू आर राइटिंग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स के बारे में, please draw the diagram of heart. Heart diagram will fetch you a lot of marks. It is easy as well. It is easy for drawing. आप एक बार practice करो, first time में नहीं आएगा for sure. एक दो बार practice करो, then you practice neat labeling the diagram, then it will be very easy. आप उस diagram को लेके you can explain the entire transportation process also. How the circulation happens from the blood and all. Then next is double circulation in humans. इसमें क्या होता है, separation of oxygenated and deoxygenated blood हो जाता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेशन हो जाता है इसमें. देन हम नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम आपको याद रखना, सीधी सीधी बात है, वो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट के अंदर. जब हम फ्लोएम एंड मतलब फ याद रखो आप. सो फ्लोएम जो है इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, फ्लोएम फूड. सो फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हो गया ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर, एज मैंने बोला, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में लिखो. ट्रांसपिरेशन जो होता है, आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चंस इन दिस सेशन, सो आप प्लीज उसको देखो, उन्हीं में से आएंगे क्वेश्चंस और कहीं से नहीं आते, ठीक है. इट इज वेरी इजी स्कोरिंग इन दिस चैप्टर्स. हो गया. देन हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देख लिया. फिर नेक्स्ट है एक्सक्रीशन. लास्ट प्रोसेस तो होना ही एक्सक्रीशन. ये सब प्रोसेसेस हमारे
बॉडी में होने के बाद लास्ट में होता है एक्सक्रीशन, जिसमें इट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर होल लाइफ प्रोसेस, बिकॉज जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको हमारी बॉडी के अंदर से निकालना जरूरी है. So this process is nothing but excretion. So removal of metabolic waste products from the body is called as excretion, right? फिर excretion in animals के बारे में लिखो. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपको किडनी का डायग्राम आना चाहिए, नेफ्रॉन्स का डायग्राम आना चाहिए, फाइन. जिसमें आप लिखोगे किडनीज के बारे में, यूरेटर्स के बारे में, ब्लैडर के बारे में, यूरेट्रा के बारे में. आप एक डायग्राम, आप ये सोच लो, आप एक डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, इट विल गिव अ वेरी नीट इंप्रेशन, राइट? तो आप डायग्राम्स जरूर सीख के जाना. देन यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, फिल्ट्रेशन कैसे होता है उसमें, रीअब्सॉर्प्शन कैसे होता है, हाउ इट इज सिक्रीटेड, ऑल दैट स्टफ. देन एक्सक्रीशन एंड प्लांट्स में जाके हमें सिर्फ देखना है कि रिमूवल ऑफ कैसे ऑक्सीजन बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर आ जाता है, देन वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, ऑल दिस स्टफ्स विल बी एक्सप्लेन in this excretion plants के बारे में. So you have to make sure that all these points are there in your answer, जिससे you will get a good score. Then important topics हो गया फिर से plants में, structure of, sorry, not in plants, in entire excretion. So structure of nephron आपको याद रखना है. फिर osmoregulation क्या होता है, then excretion in different organisms की क्या क्या excretions, कैसे excretions होते हैं, this all you should know, right? Then coming to the main part, please sit with a pen and notebook in your hands. We are going to cover 1 mark questions now. Okay? So 1 mark questions में I'll read it very fastly because this is 1 mark question. इसमें जितना भी मुझे important लगता है वो points मैं बोलती रहूंगी, so कैसे याद रखना है. But still it will be a very quick one for 1 mark, क्योंकि हम 2, 3 और 5 marks के लिए ज़्यादा time spend करेंगे, right? So first thing is which is the universal source of energy in all the cells. आपको पता ही होना चाहिए यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी का सोर्स क्या होता है, दैट इज एटीपी. हम लिखते हैं ना इक्वेशंस में भी प्लस एटीपी, एनर्जी इन एटीपी. सो एटीपी इज नथिंग बट एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स इन आवर बॉडी. सो एटीपी का फुल फॉर्म याद रखो, विच इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, डन विद दिस आंसर. 1 mark पक्का. देन इफ नो अपरेंट वर्क इज बीइंग डन बाय एन ऑर्गेनिज्म, व्हाई डज इट टेक्स फूड. ये पूछ रहे हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म कोई काम भी नहीं करता फिर भी उसको फूड की क्या जरूरत है, क्योंकि हम फूड तो इसलिए लेते ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस करें. जब कोई बंदा कुछ वर्क कर ही नहीं रहा है, व्हाई डज ही नीड एनर्जी, इज अ क्वेश्चन हियर. सो टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, ग्रोथ, reproduction, for reproduction and for repair of worn out tissues. So even though we don't perform, the organism is very idle and is not performing any action, but उसकी body के अंदर तो processes तो जारी रहना चाहिए ना. So which includes respiration, transportation, इन सब चीजों के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी हमें. It doesn't mean कि जो भी काम है उसी के लिए we need energy, right? So all the stuffs also require energy, and also human growth के लिए we need food. Then also reproduction and for repair, जितने भी worn out tissues है हमारे body में, for repairing them also, क्योंकि हमारी body is a very delicate part, very sensitive part, and it is multitasking, right? So it also needs some repair for its worn out tissues. इसीलिए if they ask this question, you have to write about all these things, life process के बारे में, growth के बारे में, reproduction and repair of worn out tissues. Repair of worn out tissues लिखना भूलना मत, ठीक है? Then next is which pathway is both aerobic and anaerobic respiration. Like कौन सा कॉमन है दोनों एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस एक पाथवे है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी देखने मिलता है एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में भी देखने मिलता है. एरोबिक एनारोबिक बोला था, एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन. फाइन. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बॉडी. मतलब ये पूछ रहे सिर्फ अगर हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में नहीं है तो कौन से चीजें, मतलब कौन सा डेफिशिएंसी होगा. दैट इज एनीमिया. एनीमिया इज कॉज्ड व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर bodies, right? Next, how does nutrition in fungus different from that in tapeworm. अब nutrition के different types होते हैं, ठीक है? Nutrition also has saprophytic, parasitic, all these types of nutrition. So ये लोग पूछ रहे हैं कि fungus और tapeworm के nutrition के process में क्या difference है. So fungus जो है it can take its nutrition, मतलब वो एक organism से ले सकता है, maybe parasitic or saprophytic. Okay, it may be dependent on other or it can consume by depending on other, right? और tapeworm जो है it is only parasitic. So आपको लिखना है कि fungus जो है वो parasitic वे में भी ले सकता है या saprophytic में भी ले सकता है. But tapeworm जो है it uses only parasitic format, right? I guess it's clear. Okay. 5 questions are done. Good. Let's go. Next is name the mode of nutrition in the following organisms.
आप एक काम करो, सारे क्वेश्चंस लिखो, क्योंकि देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस रेस्पिरेशंस टेकन बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो आप एक ऐसे फॉर्मेट में इसको याद करो जाकि ताकि यू कैन रिमेम्बर इट इवन इन योर एग्जाम, ठीक है? अब ये लोग पूछ रहे फंगाई के बारे में। सो फंगाई कैसे लेते हैं? दैट इज फंगाई इज सैप्रोफिटिक। देन अमीबा कैसे लेते हैं? लाइक एनिमल लाइक न्यूट्रिशन जैसे हम लोग लेते हैं वैसे। देन व्हाट इज पेरिस्टालसिस? सो पेरिस्टालसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके? पेरिस्टालसिस क्या होता है? Contraction and expansion of alimentary canal to push the foot forward is called as peristalsis. हमारे फुट को पुश करने के लिए इन एन एलिमेंट्री कैनाल को हमें एक्सपैंड करना रहता है. When this alimentary canal is being expanded in order to push the foot forward in our body is called as peristalsis. Okay, this contraction and expansion होता रहता है किसका? Alimentary canal का. Don't forget to write alimentary canal. Then, what is the role of cartilaginous rings on trachea? Trachea में we know that there are some rings, right? So, क्यों होते हैं वो? They prevent the collapsing of trachea when there is no air present in it. जब when सांस लेते हैं हम अंदर बाहर हवा होता रहता है. So when the air is not there, it should not collapse, right? To support it, these rings are there. What are those rings called? Cartilaginous rings. Next is name the type of blood vessels which carry blood from organs to heart. ये तो बहुत easy है. Veins, ठीक है? Veins carry करते हैं बच्चों किसको? Blood को organs से लेकर heart तक it carries. Next is how is the passage of food regulated from stomach onwards. मतलब ये जो food stomach से कैसे move on होता है, ठीक है? Food is passed down to small intestine. Stomach से जाता है small intestine में through sphincter. Then muscles present in the last part of the stomach. Fine. Next one is why is respiration considered as an exothermic process? Exothermic क्या होता है? जिसमें heat produce होता है. Why it is considered as exothermic? So respiration is considered as an exothermic process due to the breaking down of glucose or food in the presence of oxygen with release of energy. यहाँ पे क्या हो रहा है? Release of energy is taking place. That is why this is called as exothermic process. आपको पहले लिखना है कि respiration क्या करता है? It breaks down the food or glucose किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. ये एंड में क्या करता है? इट रिलीजेस एनर्जी. सो जो भी इक्वेशन में लास्ट में एनर्जी रिलीज हो रहा है या फिर हीट रिलीज हो रहा है, दोज प्रोसेसेस आर नोन एज एक्सोथर्मिक. सो जब रेस्पिरेशन कर रहे हैं एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रीथिंग. So breathing, the mechanism by which organisms intake oxygen from the environment and release carbon dioxide is called breathing. So breathing क्या होता है? We take oxygen from the environment और हम बाहर क्या देते हैं? Carbon dioxide. Then next, mention two ways in which food gets oxidized in organisms. एक हो गया aerobic respiration, दूसरा हो गया anaerobic respiration. So respiration के through ही ये जो food रहता है, it gets oxidized in organisms. I hope it is clear till now. ठीक है? फिर parasitic nutrition. Then next is what role do digestive enzymes play in the alimentary canal? This parasitic nutrition is wrong here. Fine. So the question is, what role do digestive enzymes play in the alimentary canal? So alimentary canal के अंदर digestive enzymes का क्या role है? तो digestive enzymes क्या करती है? जो complex molecules रहती है food की, उसको simpler molecules में convert करती है ताकि it can be, absorbed by the blood easily. अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगी, अब्जॉर्प्शन के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. दैट्स द रीजन दिस is converted into simpler molecules. Then next is which enzyme is present in human saliva? Salivary amylase or taline. So आप salivary amylase लिख सकते हो यहाँ पे for your ease. So which enzyme is present in human saliva? ऐसे तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. So please follow it. Maybe little slow. ठीक है? इफ या फिर लिटिल फास्ट फॉर फ्यू पीपल. जिनके लिए फास्ट है वो तो ठीक है, बट जिनके लिए स्लो लग रहा है, प्लीज यू कैन पुट योर इंक्रीज योर स्पीड फ्रॉम 1.525x to 1.5x. ठीक है? बट डोंट मिस एनी क्वेश्चन बिकॉज दिस इज योर फाइनल रिविजन. आप 1 घंटा 1.5 hour इसमें बैठोगे, you will complete your question and answers, you will be thorough with the chapter, done, preparation done. ठीक है? So take it in that way and please complete the entire video till the end. Right? What are the end products of photosynthesis? ये वाला question. What are the end products of photosynthesis? Photosynthesis में क्या release होता है? This is produced by like plants use करती है photosynthesis, right? To produce some food. So क्या क्या release करती है? Glucose release करती है
ऑक्सीजन एंड वाटर आर बीइंग रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, याद रखना, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये तीनों चीजें एंड प्रोडक्ट्स है फोटोसिंथेसिस में। Then next है give two examples of variegated leaves. So mostly it's not asked, but yeah, variegated leaf ये पूछा गया था, and ऐसे questions पूछते हैं when the paper is set above average, right? And this time the estimate is that the paper from past 2 years is very easy. Easy है, past 2 years से papers are coming very easy. So this time the papers may not be easy, may not be hard, they may be above average, right? So it's better you look into all the previous questions and go. देन नेक्स्ट, तो इसमें हम क्या लिखेंगे वेरीगेटेड लीव्स में? एक होता है क्रोटॉन, दूसरा मनी प्लांट। मनी प्लांट तो याद हो जाएगा आपको, ये क्रोटॉन्स भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द एंड ऑफ 1 मार्क क्वेश्चंस। हमने सारे 1 मार्क क्वेश्चंस देख लिए फ्रॉम दिस चैप्टर, सो यू शुड नॉट लीव एनीथिंग इफ दे आर फ्रॉम दिस चैप्टर इफ दे आर आस्किंग यू फ्रॉम 1 मार्क क्वेश्चंस। आपको कोई भी डाउट है तो अगेन रिप्ले द वीडियो एंड लिसन इट, fine. But when you're sitting for this chapter completion, at least give 2 to 3 hours for completing this. ये हो जाएगा आपका, एकदम मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। Do it chapter wise, do it previous year question wise, it will be very sorted, fine. So हम लिखेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ये थोड़े पॉइंट्स इंक्रीज वे में ही रहेंगे, क्योंकि हम अगर 6 पॉइंट याद करके जाएंगे, बाहर जाके हमें 4 पॉइंट याद रहेगी। दिस इज द रीजन मैंने सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए इसमें। सो व्हाट इज अ लिम्फ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। अब लिम्फ क्या होता है और ब्लड, ये दोनों कैसे डिफरेंट है, that they are asked. So read the question properly. First they have asked what is lymph, then they have asked the differentiation. So first you have read what is lymph. So lymph क्या है? एक light yellow fluid है जिसके अंदर lymphocyte होता है, which fights against any infections in our body. So infections क्या means this lymph fights, right? It's a light yellow color fluid. नेक्स्ट, अब पूछा ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है। ब्लड जो है इट इज पंप थ्रू आउट द बॉडी बाय हार्ट, बट लिम्फ जो है इट इज मूव्ड अलोंग थ्रू द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर लिम्फ इज मूव अलोंग थ्रू द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी, ओके इट इज रिपीटेड, देन ब्लड फ्लोज टू द बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन, मतलब पूरे इट्स इंटरकनेक्टेड, राइट। लिम्फ जो है, द मूवमेंट ऑफ लिम्फ जो है एक सिंगल डायरेक्शन में होता है हमेशा। Then blood flows throughout the body in circular. Oh, why it is repeated? Oh my god. Okay. So then lymph जो है, it is light yellow and a clear liquid. So blood के बारे में आप लिख सकते हो, blood is not light yellow, it is red in color. Then it's not a clear liquid, right? Then lymph cannot be seen with the naked eyes, but blood can be seen with naked eyes. Then lymph is purified in the nodes itself, fine, and blood is not purified in the nodes itself. It has to be forming this all the process of a transportation, then it gets purified, fine. So these are the differences beta. यहाँ पे थोड़ा सा error है, I'll update this and put it in the description, fine. Next one is how are fats digested in our bodies? Where does this process takes place? Fats, we all know that it's very hard for digesting them. कैसे digest होती है हमारी bodies में? They're asking कहाँ पे होती है body में? So fats क्या होती है? They are first emulsified with the help of bile salts, followed by their breakdown fatty acids and glycerol due to the action of lipase. All these events takes place in the first part of small intestine, duodenum. Fine. So ये कहाँ पे होती है? Small intestine में होती है. You can write this. You can skip this one. अगर आपको याद हो तो आप लिख सकते हो. I don't want to confuse you in the last moment, so you can just write. It happens the first part of small intestine. क्या? Fast digestion. Then ये fats digest होती कैसी है? फर्स्ट ये जो इमल्सिफाइड है, फैट्स इमल्सिफाइड होते हैं, दे गेट्स इमल्सिफाइड कैसे? बाइल सॉल्ट्स के प्रेजेंस में। फिर उसका ब्रेकडाउन होता है, किसका? फैट्स का ब्रेकडाउन होता है इन व्हाट दे ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। किसके एक्शन की वजह से बेटा? लिपेज के एक्शन की वजह से ये जो फैट्स है वो इमल्सिफाइड हो जाती है और ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। दैट इज हाउ फैट्स आर बीइंग डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। क्लियर? Next is differentiate between saprophytic and parasitic nutrition based on the type of food and manner of obtaining. This is most important बच्चों, बहुत बार पूछा गया है ये, ठीक है। So parasitic क्या होता है और saprophytic क्या होता है, आप देख लो पहले। saprophytic ऐसे होते हैं जिसमें we taking dead decay organic matter in the form of food is called saprophytic nutrition. So हम इसमें क्या करते हैं? Dead and decay organic matter, हमने थोड़े organisms which are dependent on this dead organic मैटर पे
डिपेंड करते फॉर द फूड, दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. व्हाइल कमिंग टू पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है, लिविंग ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइविंग देयर फूड फ्रॉम देम विदाउट किलिंग देम. तो सैप्रोफाइटिक क्या हो गया बेटा, जो डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर है उस पर हम डिपेंड करते हैं, वी कंसिडर देम टू बी फूड. फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर, हम थोड़े अदर ऑर्गेनिजम्स which reside under another organisms and they do not kill them but they are dependent on them for the food. Sorry. Then ये saprophytic nutrition जो है it shows extracellular digestion, while parasitic जो है वो intracellular होता है. फिर saprophytic it does not depend on the living host, जो host है उस पर depend नहीं करता living host पे, because it depends only on dead and decay matter. But parasitic क्या होता है, it causes harm to the organisms. harm तो होता है but it does not kill them. Then next is example क्या हो गया saprophytic में, fungi and bacteria, they depend on dead and decaying matter. Now it makes sense everything. Then parasitic nutrition, lice, tapeworms, leeches, these ये क्या करते हैं, किसी और organisms के अंदर रहती है and obtains a food. जो भी वो organism food लेता है, ये lice, tapeworm and leech भी उसी food को लेती है without harming them. Okay. Then next is how do plants exchange gases? Plants exchange gases through stomata. It is very clear and understood. Stomata के through exchange of gases takes place करती है. So जो large intercellular spaces है, they ensure that each cell is in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are being exchanged here. Obviously, exchange of gases क्या होती है? Carbon dioxide and oxygen, and ये कहाँ पे होती है? Stomata के through. Then list two factors which decide direction of diffusion of oxygen and carbon dioxide. So, environmental conditions and requirements of the plants decide the direction of diffusion of oxygen and carbon dioxide. किस डायरेक्शन में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रहा है, वो दो किस कौन डिसाइड करता है, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स के ऊपर वो डिपेंड करता है. फिर वो डिसाइड करती है कि कैसे ये डिफ्यूजन का, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होना चाहिए. देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज ऑफ प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ देयर वेस्ट. सो प्लांट्स कैसे गेट रिड होते हैं, ये क्या करते हैं, दे थ्रो अवे ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा. फिर सम वेस्ट लाइक गम्स, oil and resins may be stored in old xylem or wood stems. Some waste may be stored in leaves and barks and shed them off the time to time. Roots also throw some weights. Fine. अब ये बोल रही है कि प्लांट्स कैसे, हम तो एक्सक्रीशन करके करते हैं, प्लांट्स हाउ डू दे एक्सक्रीट द वेस्ट. सो एक तो क्या होता है, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर के थ्रू, लाइक स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर भेज देता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को. देन जो वेस्ट जैसे कि गम्स, ऑयल्स, रेजिन्स होती है, वो ओल्ड जाइलम या फिर वुड्स इन द स्टेम के अंदर स्टोर हो जाता है. देन थोड़े वेस्ट जो है वो स्टोर होती है लीव्स में एंड बार्क्स ऑफ द प्लांट्स में, जो टाइम टू टाइम शट ऑफ हो जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, तो वेस्ट इज गेट रिड फ्रॉम द प्लांट्स. कभी कभी क्या होता है, रूट्स आल्सो थ्रो सम काइंड ऑफ वेस्ट. ठीक है. So next, how is respiration different in plants and animals? Obviously, respiration in plants क्या होता है? It occurs through stomata, lentils, roots, है ना? फिर respiration in animals, it occurs through our lungs. Main thing is lungs here. Then plants में क्या होता है? It occurs through stomata, lentils. Then यहाँ पे क्या होता है? Animals जो है, they release CO2 as waste into the atmosphere. Then plants, they produce glucose and oxygen on their own to carry out respiration. But animals क्या होता है? They get glucose and oxygen from outside to carry out this respiration, right? This was basic. Then why do we feel pain or cramps in muscles after a vigorous exercise? This is a damn sure question for sure. So, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें क्रैम्प्स या फिर पेन क्यों होती है मसल्स के अंदर, राइट? सो एक्टिवली मेटाबॉलाइजिंग सेल्स ऑफ एन एक्सट्रीमली एक्टिव स्केलेटल मसल ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज कैरी ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन कैरी करता है एंड वो भी एक एनारोबिक कंडीशन में, किसके अंदर, मसल सेल के अंदर, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है आफ्टर दिस एक्सरसाइज. एनारोबिक रेस्पिरेशन पहले ही होता है विदाउट द ऑक्सीजन प्रेजेंस में, एंड जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कंडीशन में, द मसल सेल फील्स अ लॉट ऑफ पेन आफ्टर दिस एक्सरसाइज बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी सेल्स. एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, देयर इज एटीपी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अवर लेग मसल्स. Clear? This is most important. Next is list two ways in which plants can get rid of the wastes. So हमने already पढ़ा था, हम उसमें से कोई दो points
लिख सकते हैं. I don't want to repeat it and waste your time. Then what is the role of acid and mucus in stomach? This is also most asked only. So acid और mucus क्यों रहना चाहिए stomach के अंदर, है ना? So it kills germs in food and provides acidic medium for the action of the pepsin enzyme to digest the proteins in the stomach. Mucus protects, ये तो हो गया हमारे acid के बारे में. Then next हुआ mucus. It protects the wall of the stomach from the action of acid and pepsin. तो ये pepsin and acid का reaction तो हमारे like you know स्टमक में होता है. एंड दिस आर प्रेजेंट, एसिड और पेप्सिन जो है, पेप्सिन तो प्रोटीन्स के लिए होता है एंड एसिड जो है ये क्या करता है, एक एसिडिक मीडियम फॉर्म करता है जिसकी वजह से ये पेप्सिन एक्ट करना स्टार्ट करता है विच डाइजेस्ट द प्रोटीन्स. फिर म्यूकस क्या करता है, ये जब एसिड प्रोड्यूस हो रहा है इट कैन डैमेज द वॉल्स ऑफ स्टमक ना, तो म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर की जैसे काम करता है. आई होप दिस इज ऑल क्लियर. You can note it down and pause the video and surely note it down and read them and learn them and try solving and answering yourself without seeing the answers. Okay? Then, which digestive secretion does not contain any enzyme but it is important? So bile juice from liver, जो है, it contains bile salts which are necessary for emulsification of plants. So bile salts, they play a key role in emulsification of fats. Fats के digestion में they play a very key role. What plays a key role? Bile juice. Then it means breaking down of large fat drops to very fine droplets so that lipase can act upon them easily. It's easily understood. अगर आपने पिछले वाले questions देखे होंगे, this is very easy to understand. Then differentiate between auricles and ventricles. Auricle क्या होता है? That is an upper thin walled chamber. Then ventricle क्या होता है? Lower thick walled chambers. Then auricle क्या करता है? It receives blood from the veins. Then ventricle क्या करता है? It receives blood from the auricles. Auricles, it push bloods into the ventricles. और ये क्या करता है? Ventricle, it pushes into the arteries. It's very easy to अंडरस्टैंड एंड टू राइट ऑल्सो. इफ यू नो एक साइड का आपको याद है, दूसरी साइड का भी आप इजीली लिख सकते हो. Then, what is the function, role of valves in veins? So they prevent the backflow of the blood, especially when it moves against the gravity and under low blood pressure. जब वो blood जो है flow हो रहा है हमारी body में and it is against the gravity, मतलब ऊपर की तरफ flow हो रहा है and they are in our low blood pressure area, that time this valves जो है उनको backflow होने से रोकता है. ठीक है, that is the importance of valves in veins, right? Okay, I hope this is clear till now. How is the small intestine designed to absorb digested food? So walls of जो small intestine है, they have finger-like projections. जो जब भी आपको small intestine के बारे में पूछे, don't forget to mention this term, that is villi. ठीक है, villi है, villi क्या होता है? That is a finger-like projections. ये क्या करती है? ये जो villi होती है, एक finger-like projections होती है in our small intestine. ये क्या करती है? अगर food प्रेजेंट है, द फैट्स प्रेजेंट है, फैट ड्रॉपलेट्स छोटा है, थोड़ा ही है, ठीक है, बट जब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंस है इट कैन बी एनलार्ज. मतलब इसका साइज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज है, दैट इज कैन ऑल्सो बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. मतलब फिंगर्स की जैसे ये रहता है, लाइक द टाइप इट इज शोन हियर. ओके, आई एम नॉट दैट गुड एट ड्राइंग, बट या. So it increases the surface area. The food is absorbed by this villi and brought into the blood. Fat is brought into the lymph vessel, right? Then next, why are arteries thick walled and elastic? Arteries क्यों thick walled होती है and वो elastic क्यों है? Arteries क्या करती है? वो blood को arteries ये क्या करती है? Arteries receive the blood pumped by the heart. मतलब heart जो blood को पंप करती है, वो ब्लड को रिसीव करती है. कौन रिसीव करती है? आर्टरीज. सो बट जब ये रिसीव कर रही है, इट हैज अ लॉट ऑफ प्रेशर. सो वो प्रेशर को टॉलरेट एंड सस्टेन करने के लिए दे आर थिक वॉल्ड एंड दे आर elastic. सो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दे रिसीव द ब्लड पंप टू द हार्ट एंड लॉस ऑफ प्रेशर एंड हेंस टॉलरेट एंड सस्टेन द प्रेशर. इसलिए थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक होती है. Then next, differentiate between artery and veins, ये तो हो गया था already. Then next is differentiate between respiration and breathing. ये देखो आप, respiration क्या होता है? एक biochemical process होता है. breathing एक physical process है जो generally हो ही जाती है. So then respiration में क्या होता है? O2 exchange with food and energy is released here. पर यहाँ पे breathing में क्या होता है? Only exchange of gases, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का exchange होता है बस. बट respiration में क्या होता है बेटा? उसमें O2 जो है वो रिएक्ट करता है फूड एंड एनर्जी के साथ, फूड के साथ, एंड देन एनर्जी इज प्रोड्यूस. मतलब एक केमिकल रिएक्शन है, बट ये जो है एक फिजिकल प्रोसेस है.
Then energy is released in respiration, no energy is released in ब्रीथिंग, मतलब ये तो सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया ना, इसमें क्या एनर्जी रिलीज होगा बेटा. देन ये रेस्पिरेशन है जो इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना. सो इट अकर्स इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. देन ये ब्रीथिंग जो है इट अकर्स इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, दैट इज लंग्स. Next, write a balanced equation of photosynthesis. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, प्लीज नोट इट डाउन वंस. देन नेम द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, ये भी हमने देखा, देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे. सो सैलिवरी एमिलेज प्रेजेंट होता है, दिस इज द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा. इट ब्रेक्स डाउन द स्टार्च टू शुगर माल्टोस. ठीक है. फिर हाउ डज न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा, हाउ इट इज डिफरेंट इन पैरामीशियम. सो न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है, इट अकर्स थ्रू फैगोसाइटोसिस. इट कैप्चर्स द फूड बाय सूडोपोडिया. ये क्या करता है, अब अमीबा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा सिंगल सेल स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे एक न्यूक्लियस रहता है. सो जब भी यहाँ पे अगर फूड है, सो इट एनगल्फ्स दिस फूड मॉलिक्यूल्स इनटू इट. ठीक है. एंड ये कैसे कैप्चर करता है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज इंजेक्शन या फिर सूडोपोडिया. आप ये वाला टर्म लिख लो, सूडोपोडिया. फिर enclosed in cell membrane, it is called as a food vacuole. The food is broken down with enzymes present in cytoplasm, and undigested food is thrown out through cell membrane. So एक ही सेल होता है ये पूरा. So it takes in and unicellular organism है amoeba. So you should be understanding. amoeba के बारे में पूछा तो आप लिखो इंजेक्शन के बारे में, engulfs food के बारे में, pseudopodia के बारे में, and how it throws out the unwanted food through cell membrane. Then paramecium में क्या होता है, the cell has a definite shape and food is taken as at a spot, special spot. Food is moved to the spot by the movement of cilia, which is present on the entire wall of the cell. Okay. Next, discuss the role of vena cava and pulmonary veins different from each other. So pulmonary vein क्या करता है, it carries oxygenated blood को ले जाता है लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल जो हार्ट में है इन ह्यूमन बींग्स. देन वेना क्या करता है, इट कलेक्ट्स दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट इन ह्यूमन. सो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा. सो पल्मोनरी वेन क्या करता है बेटा, इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से वो हार्ट में इट ट्रांसफर्स to what in the heart, in the left auricle of the heart. Then vena cava क्या करता है, deoxygenated blood जो होता है different parts of the body में वो सब कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करता है किसको, right auricle in the human heart. Then why it is advisable to breathe through nose. Okay, so there are fine hair and mucus gland in the inner lining of our nose which filter the incoming air of the germs and dust. Moreover, the air attains the optimum temperature before reaching the lungs. ठीक है. So you have to write about the fine hair and mucus gland here, and then they filter the incoming air of germs and dust. Then we also write about it has, whenever it is going inside our body, जो air जा रहा है, it attains some optimum temperature. Optimum मतलब accurate temperature बेटा. ठीक है. Then define transpiration. How does transpiration help in upward movement of water from roots to leaves. So transpiration क्या होता है? Transpiration is the process of removal of water vapors from the aerial parts of a plant, mainly through stomata in the leaves. Evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates suction force which pulls from the xylem cells. This transpiration helps in upward movement of the water from the roots. मतलब roots अगर हम जब पानी दे रहे हैं प्लांट को, क्या होता है, पहले रूट से जाके वो सारे प्लांट्स की स्टेम्स एंड लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. इसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स को रिमूव करते हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में चला जाता है वो, एंड ये सब चीजें होती है इन द प्रेजेंस ऑफ, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है स्टोमेटा के अंदर एक्सचेंज ऑफ वाटर भी होता है. देन एवापोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस होता है. देन जाइलम सेल्स के बारे में लिखेंगे यहाँ पे. जाइलम सेल्स मैंने बोला था फूड एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, बल्कि फ्लोएम इज फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट ब्रीफली. ह्यूमन हार्ट कैसे होता है देखो. सो इट इज फोर चैम्बर्ड, आप लिखोगे इट इज फोर चैम्बर्ड. टू अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया. They receive the blood from large veins, while the two lower chambers are called as ventricles, atrias and ventricles. Between the left atrium and left ventricle, as well as between right atrium and right ventricle, there are valves. ठीक है. Then which allow the blood to flow only from atrium to ventricle. Blood ventricle से atrium नहीं जाता, बल्कि atrium से ventricle में आता है. It is four chambered, two upper, two lower. Clear. Then two upper को हम बोलते हैं atriums, two lower को हम बोलते हैं veins. Sorry, ventricles.
नेक्स्ट कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ गलत बोला मैंने, हाँ, इट इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स, या करेक्ट. देन नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट इज इट्स रोल. सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स. ठीक है, हीमोग्लोबिन इट हैज एफिनिटी फॉर O2 which helps in the transport. Fine. Then what is an enzyme? Do they play some role in our digestive system too? They are chemical proteinaceous biocatalyst. एक biocatalyst है which increase or decrease the rate of biochemical reaction happening inside our body. The enzyme present in our digestive system which is help to break down of complex molecules of food into simple ones. ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में तो हमने पढ़ा, यहाँ पे तो फैट्स का एमल्सिफिकेशन होता है. इन वेल कमिंग टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें होता है वाटर रीअब्सॉर्प्शन अकर्स थ्रू विलाई. अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम एंड थ्रोन आउट थ्रू द एनस. Exit is regulated by the anal sphincter. Then what are the outside raw materials used by an organism? Autotrophs can use simple inorganic molecules like water and carbon dioxide, while complex organic molecules are used by heterotrophic organisms which are proteins, fats and carbohydrates. So autotrophs जो होती है वो एक simple inorganic substance को लेती है as raw materials which are water and carbon dioxide because they produce food. But हम क्या करते हैं, heterotrophs, we are dependent on some others and we take in the materials such as proteins, fats and carbohydrates which are more complex in nature. And next is, why are ventricles thick walled and muscular? Since ventricles have to pump the blood into various organs, they are thick walled and they are muscular in nature. How is the length of intestine related to the food habit of the animal? So, intestine एक ऐसा जगह है जहाँ पे digestion and absorption occur in a very long in herbivores and in carnivores, as digesting the meat is easier than the digesting grass. So, it depends on the complexity of the food that we take in there. Now, respiration and photosynthesis का differentiation पूछा है. It occurs in all the living cells. Photosynthesis, it occurs only in autotrophs. ठीक है, next is O2 reacts with food and energy is released. यहाँ पे CO2 and H2O combine होती है to form starch and water in the presence of light. फिर respiration जो है, it occurs in cytoplasm and mitochondria. While coming to photosynthesis, it occurs in plastids, chloroplast. Next is differentiate between alveoli of lungs and nephrons of kidneys. So alveoli क्या होती है and nephrons क्या होती है? Both are important in their own organ. So alveoli एक thin walled sac like structure है surrounded with network of capillaries. Alveoli क्या करती है? It helps in the exchange of gases between the blood and outside air, that is removal of CO2 and taking in of oxygen. This is O2 beta. And waste produced is CO2 and water vapor, which is gaseous waste. अब nephrons क्या करती है? They are thin walled, tubular structure है. This is sac like structure, ये tubular है. It is surrounded with network of capillaries. दोनों ही network of capillaries से surround करती है. Nephrons क्या करती है? It helps in the filtration of waste like urea and uric acid from the blood. Waste produced in urine salts are urea, acid oxalate dissolved in water liquid. Fine. Then we have successfully completed 2 marks and 1 mark questions. So you should be thorough with all of them. Now let's go to the main part, that is 3 mark questions. You should not lose any of the mark from this chapter after completing of this video. Please pause the video wherever required, note down, please memorize it and then go to the next part of it. Please, I'm telling you again and again, you can replay the video whenever required and then learn them. Once you sit for 2 to 3 hours on this chapter, you'll complete them and you will be able to secure your marks at one side. So next, we are going to see what is sequence in photosynthesis. We already know all the steps, so I'm not telling it in detail, as we have already in number of times we have seen. So आप जब करते हो 2 mark और 1 mark के questions, most of your 3 and 5 mark questions are sorted. You just have to see about diagrams and what are the key points present here. So next is, if in case they ask you an activity to show that CO2 is produced during breathing, आप कैसे prove करोगे कि CO2 produce होता है breathing के time पे? So materials क्या required होगी? 2 test tube लेना पड़ेगा, एक cork with 2 holes. This is the cork बेटा, एक wooden cork. Okay. Then 2 glass tubes जो है आपको यहाँ पे दिख रही है. These are the glass tubes bent at the right angle. फिर syringe एक लेंगे हम. This is a syringe. Then lime water which is CaOH twice. तो प्रोसीजर क्या होता है, हम लेंगे freshly prepared lime water,
CaOH2 in the two test tubes, दोनों टेस्ट ट्यूब से हम ले लेंगे, फिर कॉर्क को फिक्स करेंगे with two holes in the test tubes A and B, फिर जो ये क्लास ट्यूब्स है इस कॉर्क के अंदर फिट इन करेंगे, mentioning the test tube as A and test tube B. Then what we do is we exhale into the tube and record the observations. We pass the air by syringe now to the lime water contained in the test tube B and we record the ऑब्जर्वेशन अगेन. ऑब्जर्वेशन क्या हो गया यहाँ पे बेटा, लाइम वाटर जो है टर्न्स मिल्की सूनर इन द टेस्ट ट्यूब ए देन इन टेस्ट ट्यूब बी. कंक्लूजन क्या है, द exhaled air contains lot of CO2 which turns lime water in milky, right? But this proves that CO2 gas is exhaled out by humans during respiration. Next, what is the composition of urine? Are glucose and proteins normally present in urine? Why? How is the volume of urine regulated? So the urine contains mainly water, salts, urea, and uric acid. Urea and uric acid, water, and various salts. These are the main components of urine. No, what are not present? Glucose and this proteins are not normally present in urine. No, they are not present in urine as glucose जो है, it is reabsorbed by the nephron, while protein are not filtered from the blood in glomerulus in a healthy kidney. Volume of urine जो है, it is regulated by the amount of excess water that we take in, the amount of dissolved waste in the blood. It depends on these two things. What depends? The volume of the urine. Next one, what is the role of mucus in stomach? This is also already done. Then what are the two vital functions of human kidney? So excretion करवाता है, which is removal of toxic waste like urea and uric acids. Osmoregulation करवाता है, that is the process of maintaining the right amount of water and proper ionic balance in body. It is done by controlling the amount of water and salts reabsorbed by the nephron tubules. Then how is oxygenated blood exchange between blood and tissues? Okay. And what is hemoglobin? So exchange of gases in tissues, it occurs through diffusion. Oxygen is carried as oxyhemoglobin from lungs to tissues. It dissociates the carbon dioxide diffused into the blood from tissues. It is transported and dissolved from form and reaches lungs. Again, it diffuses to alveoli. Respiratory pigment. इन्होंने पूछा है ह्यूमन हीमोग्लोबिन क्या होता है. So it is a respiratory pigment. It is a red colored protein present in the cells, and then hemoglobin has affinity for oxygen. Next is what are the important features of respiratory structures in animals, and or how are alveoli designed to maximize the exchange of gases, right? So all respiratory systems should have the important features. एक तो है large surface area होना चाहिए, then there should be thin and delicate surface for diffusion and exchange of these gases. Then it is generally located in the protected inner part of the body. Then rich blood supply to respiratory organs, since all of them are present in alveoli, hence it is perfectly designed for exchange of gases. Then what is excretion? We already have learned about this. Then what is the need to have transport system in the complex organisms? We know why transportation is important. Please pause the video and read the answer once. I don't want to waste your time explaining the things again and again. So I'll just focus on what is not being focused. So explain how is inhaled air is inhaled. हम लिखेंगे इसमें पूरी nostrils के बारे में, trachea के बारे में, bronchi के बारे में, lungs के बारे में. You can just elaborate the answer as much as you want. Then how is food transported in the plants? Again, about phloem and all. Then you can also write translocation, why it is important. Translocation, beta मैं बोल देती हूँ, transport of organic food from the leaves of the other plants of the plants through the seed tubes of phloem tissue is called as translocation. ठीक है, आप एक बार इसको read down कर लो. Then next is what are the main events occurring in the small intestine? Again, we have done the main thing, that is the bile emulsifies the fats present in the blood. Then pancreatic juice containing trypsin for digesting proteins and pancreatic amylase for starch act upon the food. Then bicarbonate ion secreted by duodenal wall makes the medium alkaline because it is required for the action of pancreatic enzymes. Enzymes produced in the intestinal juice complete the digestive process. Digested food क्या होता है? Amino acids, sugars are absorbed by the blood capillaries present in the villi of the intestine. Next is digested fats are absorbed by the lymph vessels present in the villi of intestine. Then give the systematic representation of different pathways of breakdown of glucose molecules. अब हम देखेंगे बेटा इसको. Glucose एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. In absence of oxygen in the cytoplasm ये एक pyruvate बन जाता है. पायरुवेट कुछ नहीं होता है बल्कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल, पहले ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, कन्वर्ट हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल को. देन ये पायरुवेट
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, वील सी। पायरुवेट जब जाता है बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, देन इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जब ये पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एनर्जी इज कॉमन हियर एवरीवेयर। देन पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पर यहाँ पे क्या होता है बेटा, इट इज अंडर साइटोप्लाज्म, यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। It produces ethanol, CO2 and energy, which is a two carbon molecule. ठीक है, I hope this is clear. This is mostly asked and is most important. Please don't ignore the equations because there are very limited reactions in biology. Please try to cover them. Then which process in plants is responsible for the clouds formation and precipitation? Define the process. How is this process important for the plants? So this they are due to transpiration. Transpiration क्या होता है? Evaporation of water from aerial parts, leaves of plants to the mainly stomata. In plants, water जो है it rises because of the transpiration, and in nature of water cycles operates because of it. Transpiration is a process of cooling down in a plant. Evaporation of water molecules from cells of a leaf creates a fructifying suction pulse, okay, which pulls the water from the xylem cells. This transpiration helps in upward movements from leaves, roots to leaves. Then what is the fate of glucose molecule? Anaerobic respiration, yeast, still and lactobacillus. This is just the reactions you have earlier learned. बेटा हमने जब glucose and pyruvate formation में हमने पढ़ा है, that is how what is taking place here. You can just go through these reactions. I'm not wasting time in again explaining them. Then leaves of a healthy potted plants were coated with Vaseline to block the stomata. Will this plant remain healthy for long? Stage state sorry state State three reasons for your answer. So, no, the plant will not stay healthy for a long time. Reasons क्या है? It will not be able to exchange O2 and CO2, hence respiration will be affected adversely. क्योंकि हमने उसके ऊपर vaseline लगाया है. Then photosynthesis will be affected as CO2 will not be available for it. Then transpiration will not take place, hence there will be no ascent of sap. Hence, no water absorption from the soil will take place. Okay, then these are the questions which are mostly asked for this transpiration, transportation and plants के बारे में यही सारे questions पूछते हैं, which is situational based questions. Next, if a plant is kept covered with a polythene sheet, we notice some water drops on the inner side of the sheet after some time. What do they do? Name and define the process and others. If a plant is kept covered with a polythene sheet, we notice some drops on the inner side of the sheet after some time due to the effect of transpiration. Then you'll all write about the process of transpiration and how is temperature regulated. Correct. Now we are coming to the most important part, which is 5-mark questions. So in 5-mark questions, you will see all the repeated parts. So I am going to just read out the important points and then you can just pause the video, learn them and then move to the next question. This is how you'll do. Please sit for 2 hours on a chapter and then complete it completely. First listen to the video, replay it, then pause the video, learn the question and answer, then move to the next question. Once the next question is being done, again revise the previous question and then move forward. With this, you'll complete a chapter in 2 hours. Right? Now, how are water and minerals absorbed and transported in plants? हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन के बारे में हम लिखेंगे, जाइलम फ्लोएम के बारे में हम लिखेंगे, देन वेजल्स के बारे में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बारे में, स्टोमाटा के बारे में लिखेंगे, लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है, देन रूट्स कैसे ऑब्जर्व करते हैं इन सारी चीजों को. वी आर गोइंग टू राइट फ्रॉम द की पॉइंट, मतलब रूट से लेके स्टेम एंड लीव्स तक कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे ऑब्जर्व होता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, स्टोमेटल प्रोसेस, all these things, suction pulls, all these things like xylem, phloem, all this will be included. ठीक है, आपको अगर transportation plants पता है, you can directly answer this question. Then describe the mechanism of gaseous exchange in tissues and lungs. Or how is different forms hai, how will this question be asked? So exchange of gases kaise hota hai tissues mein, that is their major focus. So most of the oxygen carried by hemoglobin is carried by hemoglobin in the blood. तो फिर कैसे CO2 exchange होता है, कैसे CO2 get dissolved in the plasma which reaches the lungs from where it is expelled out during the exhalation. फिर mechanism of inhalation कैसे होता है, mechanism of exhalation क्या होता है. Inhalation में the thoracic cavity expands when diaphragm and rib muscles contract. The thorax moves towards upwards and downwards, upwards and outwards, right? Increasing the volume inside the thoracic cavity, which
helps in the exchange of gases in and out of the lungs. The air pressure in the cavity decreases, hence the air rushes in the lungs through the nostrils, trachea, and bronchi. Whenever you're writing about respiration, you have to write about nostrils, trachea, and bronchi. Then mechanism of exhalation कैसे होता है? Exhalation of gases between alveolar sacs and blood occurs, having CO2 enters the alveoli. Thoracic cavity comes back to its original size and the muscles relax. This air containing CO2 is exhaled out through bronchi, trachea, and nostrils again. Now, difference between aerobic and anaerobic respiration. Just pause the video, learn it because already it's been done 2 to 3 times previously in this video. Next is mention the two components of blood, that is plasma and blood cells. Then trace the movement of oxygenated blood in the body. So oxygenated blood कैसे जाता है, flow कैसे होता है, that is what we are going to see here. First, pulmonary vein from lungs से left atrium में जाता है, फिर left ventricle में जाता है, then it goes through aorta, then arteries to all the organs. Then next is valve, write the function of valves between the atrium. जैसे हमने बोला atrium और ये ventricles के बीच में valve रहता है. Why it is there? It is there to prevent the backflow of the blood from ventricles to atria when laters are contracting. Then they are asking write one structural difference between the composition of arteries and veins. इन दोनों में difference क्या है? According to the structure. So arteries जो है they have thick muscular and elastic walls, जबकि veins जो है they have thinner, less muscular walls, but they have valves. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे most exchange of things happen. Then next, define excretion. This is your NCERT textbooks diagram. You have to draw this diagram whenever they are asking you about excretion. Here you are going to mention, draw two kidneys. You are going to mention as left renal artery, left kidney, left renal vein, aorta, vena cava, left uterus, urinary bladder, and urethra. Fine. So name the basic filtration unit present in the kidney. Nephron is a basic filtration unit that is present in the kidney. Then next is draw the excretory system in human beings and from where this urine forms. Urine कहाँ पे होता है? Kidney में form होता है. Then it is a long tube which collects urine from the kidney, that is ureter. ये एक long tube है, क्या करती है ये? It collects urine from the kidney. Then store urine until it's passed down. Urinary bladder के अंदर urine is being stored until it gets passed on. Next, draw two main functions of human kidney. आप देख सकते हो it is being repeated. Once you learn this diagram, you can answer any question asked from excretion, right? Then you write about double circulation in human beings. As I've already told, what is double circulation? You just have to see this diagram, which is having pulmonary artery to lungs and pulmonary vein from lungs. एक है lungs से आता है and एक lungs की तरफ जाता है. So vena cava present है, then body के अंदर से जो है that blood comes here, then capillaries in the organs apart from the lungs, then there is aorta for exchange of gases, then there is an artery. So यहाँ पे क्या होता है? Such a flow in which blood enters the heart twice is called as double circulation. It helps in keeping the oxygenated and deoxygenated blood separate. Basically, to the double circulation, it keeps oxygenated and deoxygenated blood separated. The right atrium receives blood from vena cava and pumps the blood into the right ventricle. फिर blood is sent to the lungs again where it is being oxygenated. Then it is sent through the right and left pulmonary veins to the left atrium where it is pumped to the left ventricle. The blood then travels to the ascending aorta where it leaves the heart and delivers oxygen to different parts of our body. Next, see, the same thing is being asked. Please pause the video and note it down. What are the different components of blood? So blood is having different components. It is a liquid connective tissue. It is formed of two main components. One is fluid matrix or plasma. Next is cellular elements which have red blood cells, WBCs, blood platelets and all. So in fluid matrix or plasma, it is a pale color and it is of pale color and it transports much substance like dissolved carbon dioxide, glucose, amino acids, urea, etc. It has mainly water, some proteins like albumin, fibrogen, blood clotting protein, okay, and many other substances to be transported. The next is cellular elements, red blood cells, RBCs or erythrocytes, which transport this O2 and CO2. They are enucleated, disc-shaped, full of red colored protein pigment, which is called as hemoglobin. Next is white blood cells or leukocytes, which fights disease causing agents. They are larger,
nucleated and are of different types. Next, consisting of blood platelets or thrombocytes, okay, which help in blood clotting. They are fragments of some larger cell, hence do not have any nucleus. Fine. Then again, it's about nephron. Please pause the video and note down what are the important points. This is the diagram of nephron. Here you will be writing mainly about Bowman's capsule and glomerulus. Then branch of a renal artery is there. Then branch of renal vein is there. Then capillaries are there. There is a collecting duct. There is a tubular part of nephron. Okay, these are the key diagrams. Next, this is one of the activity which is for testing the starch present. Okay, and which is taking place with the help of saliva, and saliva is having the enzyme known as salivary amylase, which is responsible for breaking down of this complex food molecules into smaller food molecules, which can easily be later absorbed by the blood, right? This is also easy. They are just asking you what is the exchange of gases and how it is happening in human beings. I guess this is answerable. Next, salivary amylase, villi, pepsin, all this have been already discussed. Explain how oxygen from blood from this chamber is sent to all parts of the body. So when left atrium contracts, the oxygenated blood is poured into the left ventricle from atrium to ventricle. When the left ventricle contracts, the blood is pumped into the aorta, the largest arteries, which distributes it to all the parts of the body through arteries. Then, what are the possible observations in the given set? There is water and there is KOH. So nothing will happen to the level of water or KOH, as a vacuum will not be created in the flask. Then name the gap formed between the kidney-shaped cells in the given. So what are these things called? Kidney-shaped cells here. This is nothing but stomata, and gas exchange of this exchange and transpiration occur through the stomata. Dot-like structures, these are known as chloroplasts. This dot-like structures, this is stomata. Fine, clear. Stomata has different parts. You have to mention all of them. Next, here they have a setup. After 8 hours, what is he likely to observe? They're having germination of seeds is taking place, water is there, and a cork is placed. Then a water would have risen in the tube, as the oxygen present in the airtight flask would have been used up by the germinating seeds for their respiration, and CO2 gas, which is being produced by them, must have been absorbed by KOH. As a result, a partial vacuum created will make water from beaker move up. So water जो है, it will rise initially while seeds are germinating, but later on they'll fall. So we have, students, completely covered all the important questions, marks and weightage wise. In this chapter, life processes, we covered all the 1 mark questions, 2 marks, 3 marks, and 5 mark questions. You have seen that there are many repeated concepts and most are concepts. The summary of the chapter is also being given. So the PPT entire notes will also be provided in the description. Please don't forget to like and subscribe our channel, as next chapter that we are going to cover is control and coordination. If you have any suggestions, please put down them in the comment box so that I can rectify them and focus on those concepts next time while explaining. Okay. Thanks a lot for your time. All the best for your exams. Don't waste your time. Please replay the video, see it again, learn the question answers, take a pen and paper, test your knowledge, and then you're done with this chapter. Thank you. Thank you for staying till the end. Subscribe to our channel, Easy Patashala.